Hello everyone, welcome to our new lecture. We are learning chapter number 5, that is acids, bases and salts. In our previous lecture we have seen about the basic radical and acidic radical. So we have a general idea about the compounds which are ionic compounds. Okay, so we have seen the examples of chemicals or the compounds, okay, where we have a basic radical, that is a cation, and an acidic radical, that is an anion. Okay, so basic radical is nothing but a element in the compound which have a positive charge over it. Okay, and acidic radical is a element in the compound which have a negative charge over it. Okay, so if basic radical is H plus ion, then the compound is going to be acid. Okay, so if the basic radical is H plus ion, the compound is acid. And if the acidic radical is OH minus ion, okay, if the acidic radical is OH minus ion, then the compound is going to be basic. What it is going to be? It is going to be basic. Okay, so this is what we have studied in our previous lecture. Now we are going to see what is an ionic compound. Okay, so the molecule of an ionic compound has two constituents, namely cation, that is positive ion, also called as basic radical, and anion, that is negative ion, also called as acidic radical. So if in any compound you find elements which have positive charge and negative charge, that is, if you find cation and anion in the compound, then the compound can be called as ionic compound. Okay, so the positively charged element or the particle is going to be my cation, that is basic radical, and the negatively charged element is going to be my anion, that is acidic radical. Okay, keep this in mind. Basic radical is cation, acidic radical is anion. Okay, now as there are two elements having different charges, okay, plus and minus, positive and negative, therefore there is going to be some kind of force of attraction between these two elements, between these two charges, and that force of attraction leads to the combination of these elements. Okay, this force of attraction is the reason behind the making of the compound. Okay, if this force is not present, definitely these two elements are not going to be combined with each other and we are not going to get a new compound. Okay, so the force of attraction which is between this ion, okay, that force of attraction is nothing but the ionic bond. What it is called? It is called as ionic bond. Okay, the force of attraction between one positive charge on a cation and one negative charge on an anion makes one ionic bond. Okay, so one positive element and one negative element. Okay, the force between these two positive and negative element is going to make one ionic bond. Okay, and it will be strong enough to hold these two elements together and making a molecule or a compound. Okay, now let us try to understand this or about the ionic compounds with the help of example. Now in the figure you can see there are two elements, that is Na, that is sodium, and another is chlorine Cl. Okay, now sodium is a metal, so we all know that metals have a positive charge on it. Okay, if the electronic configuration is not stable, okay, the electronic configuration is not stable, and if we want to make it stable, what we are going to do, we are going to eliminate the excess electron from the last orbit, and therefore we will be getting a cation. Okay, now in the sodium you can see the electronic configuration of sodium is 281. Okay, so atomic number is 11. In the first shell two elements are there, in the second shell eight elements are there, and in the third shell there is only one element. So if in the last shell eight elements are present, how many elements? Eight elements. Then and then only we can say, sorry. In the last shell, if there are eight electrons, sorry. So sodium is the element, and in the first shell two electrons are there. In the second shell eight electrons are there, and in the third shell only one electron is present. Okay, so if
In the last shell of any atom, 8 electrons are present, then we can say that the element or the atom is stable. Okay, that is, it is neutral element. अगर किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। उसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, लेकिन सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ओके, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मेरा सोडियम एटम क्या हो, स्टेबल हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का लास्ट शेल में, उसे मैं बाहर निकाल दूंगा। इस वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तब उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कीप दिस इन माइंड, when the electron is loosened from the atom, then positive charge is going to be developed over that atom. Okay, सो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और वो चार्ज कब डेवलप होगा, जब मैं सोडियम को स्टेबल करने की कोशिश में उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है इलिमिनेट कर दूंगा, और कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा मुझे, 2,8 मिल जाएगा। 2,8 अगर कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब क्या है, स्टेबल होना चाहिए, ये हमारा मानना है। ओके, लेकिन सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 10 अभी नोट किया है। ये सेकेंड जो आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि Na+, देखो सोडियम Na, नाइदर प्लस नॉर माइनस। ओके, Na के ऊपर ना ही प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स 11 है। लेकिन जब हम पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कब होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर दें। तो जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रहा है, 2,8 मिल रहा है। ओके, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, Na+ मिल गया, दैट इज कटायन। ये क्या है, कटायन है। पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है, ये कटायन है। अब क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल के ऊपर चार्ज क्या आपको देखने मिलेगा, नेगेटिव चार्ज देखने मिलेगा। जनरली आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। Okay, as the atomic number of chlorine is 17, atomic number of chlorine is 17, so the electronic configuration is 2,8,7. In the first shell there are 2 electrons, in the second shell there are 8 electrons, and in the last shell there are 7 electrons. Okay, octet पूरा करने के लिए, to complete the octet, chlorine requires one more electron in the last shell. Okay, साथ है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ओके, सो अभी मैं क्या चाहता हूं कि मेरा क्लोरीन जो है वो भी स्टेबल हो जाए, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो वो कैसे होगा, अगर मैं उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, किसी भी तरीके से क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाए, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या मिल जाएगा, 2,8,8 मिल जाएगा। ओके, सो जब कोई एलिमेंट या फिर एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनायन। ओके, देखो यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम लोग एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, इलिमिनेट करते हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे। और जब हम लोग किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज कटायन, इलेक्ट्रॉन इज लूजन। ओके, negative charge anion and electron is gained by that atom. ओके, अब यहाँ पे सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है।
इस वजह से हमें एक कंपाउंड फॉर्म होते हुए नजर आता है, और वो कंपाउंड क्या है, NaCl है। ओके, NaCl मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। ये आयोनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये एक दो आयन से, एक है कटायन पॉजिटिव आयन, और एक है अनायन दैट इज नेगेटिव आयन, दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ है। इसे हम लोग क्या, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। सो NaCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। और ये क्यों क्रिएट हो रहा है, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना था। तो क्या हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन को, और क्लोरीन ने बॉन्ड तैयार किया सोडियम के साथ में। ओके, नाउ यहाँ पर सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, लेकिन क्लोरीन ने 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम को नहीं दिया। इंस्टेड क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन देना जो है वो इजी है, रेदर देन 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना। ओके, सो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में हमें एक बॉन्ड क्रिएट होते हुए नजर आता है, और वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। ओके, इस तरीके से दोनों भी एटम जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं। ओके, और कंपाउंड क्रिएट करते हैं। ओके, जनरली हमें क्या ध्यान में रखना है कि कटायन और अनायन से जो कंपाउंड क्रिएट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। ओके, कटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम होता है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अनायन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड एटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला है। ओके, दिस आर जनरल कंसेप्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, और आयोनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ही डिटेल स्टडी है, वो आप आने वाले क्लासेस में और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। ये सिर्फ जनरल आइडिया है आयोनिक कंपाउंड के बारे में जो आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट अस सी द डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड को डिसोशिएट करना मतलब क्या है, हम ये पहले समझेंगे। देखो, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने मिलेगी, इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो आपको ये पर्टिकुलर फिनोमिनॉन में देखने मिलता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देखने मिलेगा। लेकिन जब NaCl मतलब सोडियम और क्लोरीन के जो आयन्स है वो जब कंबाइन हो जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड कंप्लीटली बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक बहुत ही हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कंपाउंड को। और हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड होने की वजह से सॉलिड स्टेट में NaCl से करंट फ्लो नहीं हो सकता। ओके, तो डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या है, इसका सिंपल कंसेप्ट है कि मैं NaCl, ये जो कंपाउंड है इसमें से मैं Na को अलग कर दूंगा और Cl को अलग कर दूंगा। मतलब ब्रेक कर दूंगा, Na को अलग कर दूंगा, Cl को अलग कर दूंगा, और इसे ही हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। ओके, नाउ हाउ आई कैन एलिमिनेट और हाउ आई कैन सेपरेट द Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। ओके, now what we can do, we can mix the salt with water. Okay, and by mixing the salt with water we can easily separate the Na plus and Cl minus ions. Okay, बहुत सारे मिक्सिंग मतलब हम लोग सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं, वाटर और सैंड का भी, वाटर और शुगर का भी, और वाटर और सॉडस्ट का भी। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि सॉल्ट क्या है, यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड है, और इसका जो डिसोसिएशन है वो हमारा मेन कंसेप्ट है स्टडी करने के लिए इस चैप्टर में। An ionic compound forms an aqueous solution on dissolving in water. Okay, so whenever you are going to dissolve an ionic compound in the water, you are going to get an aqueous solution. In the solid state, the oppositely charged ions in the ionic compound are sitting side by side. When an ionic compound begins to dissolve in water, the water molecules penetrate in between the ions of the compound and separate them from each other. So when we start to stir the salt in the water, what it is going to do, it is going to dissolve the salt in the water. Okay, and when the dissolving starts, the molecules, water molecules, they are going to penetrate the bonds, they are going to break the ions of the ionic compound. Okay, that is to say an ionic compound dissociates during formation of an aqueous solution. Okay, now each of the dissociated ions in the aqueous solution is surrounded by water molecules.
This state is indicated by writing AQ, that is meaning aqueous, on the right side of the symbol of the ion. Okay, so now NaCl, which was in solid state, okay, it was stable. When we mix that NaCl in the water, what is going to happen? The ions are going to separate. So we are going to see the separation of Na plus and Cl minus ion. Now both these ions, that is cation and anion, are going to be surrounded by the water molecules. Okay, and hence they are called as aqueous solution. Okay, so we get Na plus in aqueous state and Cl minus in aqueous state. So generally, what is dissociation of ionic compound? It is nothing but the separation of cation and anion from the ionic compound. Okay, keep this in mind. The separation of cation and anion in an ionic compound is nothing but the dissociation of ionic compound. So in this chapter, we have seen the definition of ionic compound and we have gone through the dissociation part of this. Okay, in the next lecture, we are going to see what is Arrhenius theory of acids and bases. So generally, we are going to start the main concept from next lecture onward. Okay, so until then, goodbye.